So it is our first lesson. The first thing you need to understand, why do we need to learn coding? Coding is nothing but a language. जैसे अगर मुझे जर्मन में बात करना हो तो मुझे जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, मुझे फ्रेंच में बात करना हो तो मुझे फ्रेंच आना चाहिए. द सेम वे इफ आई नीड टू टॉक टू अ कंप्यूटर, आई नीड टू नो कि आखिर कंप्यूटर कैसे मेरी बातों को समझेगा. सो प्रोग्रामिंग हेल्प्स अस टू टॉक टू अ कंप्यूटर. एंड यू मे आस्क व्हाट इज द नीड, बिकॉज if I talk to a computer, I can make computer do whatever I want. मुझे अगर कुछ भी करवाना हो कंप्यूटर से, a fast calculation, a fast search, or I have to create an app, or I have to understand anything, then I need to know the programming language. So coding is the new literacy. Okay. So we will start. And another thing you have to keep in mind, जैसे कार चलाना हम तभी सीख सकते हैं जब हम सिर्फ बुक पढ़ के कार नहीं चला सकते हैं, ना ही बेसिकली अगर कोई भी मशीन चलाना हो तो सिर्फ बुक से काम नहीं चलता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है. द सेम वे if you want to learn programming, then you have to practice also. You cannot just watch video and think कि you will understand. So we will start learning. First of all, we need a platform. तो कहाँ पे सीखना है? We will use Replit, R-E-P-L-I-T, Replit. It is available on mobile and desktop both. So when you click करोगे, then you will get several options. तो कहाँ से करना है? तो यहाँ पे हम create पे जाएंगे and we are going to learn Python. तो यहाँ पे Python क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नाम आ जाएगा. You can edit up. जैसे I will give my name, my code. यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं या नहीं भी. If I don't give, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद create replit, ये ऑटोमेटिकली जो है सारा काम कर देगा. तो अब ये रेप्लिट हो गया. तो यहाँ पे बेसिकली वी विल राइट अ प्रोग्राम. अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये स्क्रीन है, ये टेस्ट करने के लिए होगा कि ये प्रोग्राम मेरा सही है या नहीं. तो इफ आई टाइप प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में ही लिखा जाता है, इसमें कुछ भी लिखना हो. इफ आई राइट हेलो एंड इफ आई रन, सो ये आ जाएगा हेलो, हेलो इंडिया. कुछ भी लिख के बस टेस्ट करने के लिए रन करना है. हेलो इंडिया. So I can write whatever I want to write. If I need to write another sentence, so again I will write print and I will write namaste. Okay. So what I'm trying to do, I'm trying to first of all understand how the coding is basically written. यदि मैं एक स्टार का फॉर्मेशन बनाता हूँ, स्टार, स्टार स्टार एंड स्टार स्टार, तो ये किस तरह से दिखेगा. Okay. So what I can do further? Can I make it automate? क्या मैं ये ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में लिख के सारा काम हो सकता है? तो we will explore everything. So coding helps us to basically write this thing faster, or I can also write several. Let me show you something more. Name, I would say Bharat, and print. ये मैंने नेम में सेव किया है. I will explain to you later कि कैसे ये बेसिकली आता है. Hello, I'm just trying to write right now. Hello plus name. Hello plus name. So let's see. Hello Bharat. Okay.
what I can do further? Can I add print 9 plus 9? 9 plus 9. 18. So we will start from here. We will not write only these sentences. There will be much more. So it is just an intro video. So we will write all our code in Python. सारा code Python में होगा. So you can further explore. अभी आपको खुद से लिखना है. Whatever you want to write, just test different thing. And then when we will start, then I will tell you कैसे हम इसको और better कर सकते हैं. Okay.